theorem which gives all connected subsets of R the real line. A subset E of the real line R, okay, is connected if and only if E has the following property. So what is the property? So if X and Y be 2 points in E, or two elements of E, and there is a point Z between X and Y, then this implies, okay, implies Z belongs to E. So can anyone tell me what is this property? आपने कोई देखा ऐसा कोई सबसेट है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? निहारिका, निहारिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बता सकती ये कौन सा सबसेट कहलाता है? इसका कुछ नाम है, आप लोगों ने ये बहुत पहले पढ़ा है, जब आप 11th क्लास में थे तब से इसे जानते हैं। क्या कहते हैं हम इस सेट ई को? अनुराग? सर याद नहीं आ रहा है। अच्छा, याद नहीं आ रहा है। कोई और किसी को याद आ रहा है? वो पंचशील, पंचशील, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, मुस्कान गौतम, सुभाष बताएंगे, सुभाष अग्रहरी, आप बता सकते हैं ये कौन सा सेट है ई जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसको क्या कहते हैं? ओके, कोई बात नहीं। आपने इंटरवल का नाम सुना? इंटरवल, हेलो, क्या आप जानते हैं इंटरवल क्या होता है? यस सर। क्या इंटरवल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? यस सर। हाँ, ये ई क्या है? एक ई, इसका मतलब दिस मीन्स E is an interval, okay? E is an interval, or it could be a singleton set also. E is a singleton set or an interval. अब ये सिंगलटन भी एक इंटरवल होता है। अगर if I write A, okay, this singleton, this is this interval A, closed interval A, A, okay? So you see, so connected subsets of real lines are either singleton or intervals. Okay, let us see a proof of this. So proof भी बहुत इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है. Let's see a proof. So first we assume that E is connected. We will show that E satisfies this property. Okay. So assume that E is connected. Suppose E is connected. ओके, और हमें शो करना है कि E ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तो एज्यूम on the contrary that E does not satisfy this property. Okay, assume on the contrary that one fails to, okay,
This means there exists x, y, z, okay, such that x and y both belongs to E, and x less than z less than y, सर आवाज but नहीं आ रही है। z not in E. क्या किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो क्या सर किसी वॉइस को भी बहुत मेरी स्लो आवाज? आ रही है। हेलो हेलो यस सर। सर आ रही है आवाज? सर आ रही है। आवाज आ रही तो अपना वॉल्यूम बढ़ाइए भैया, वॉल्यूम बढ़ाइए, उसका आवाज आएगी। सो हमने ये मान लिया कि ऐसा है। नाउ व्हाट वी डू, वी डिफाइन टू सेट्स। अभी क्या था आपके पास, एक x था एक y था, बीच में कहीं पर z है, ओके। आपने कहा ये z जो है ये E में नहीं बिलोंग कर रहा और E कनेक्टेड है, ये लेके चल रहे E कनेक्टेड है। तो आप दो सेट्स बन गए आपके पास, एक सेट z से छोटे वाले सारे एलिमेंट, एक z से बड़े सारे एलिमेंट। सो लेट अस राइट देम। A equal to all those A in R such that A less than Z, and B is all those elements of or those points which are greater than Z. Okay, both A and B are open in R. Both A and B are open in R, and E is a subset of A union B. Okay, अभी आपने एक या सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन सिंस दिस x बिलोंग्स टू E, x जो है E में A में भी है एंड x बिलोंग्स टू E भी है, ओके। दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन E इज नॉन एम्प्टी। सिमिलरली this y, this is part of B, this belongs to B, and y also belongs to E. This means B intersection E is non-empty. Okay, and you know A intersection B is empty set. So A intersection B is empty. So this part, this was A, this was B. Their intersection is empty. So what you get is A intersection B intersection E is empty. So now recall a theorem for disconnected sets. Okay, you have seen such theorem for disconnected sets, which says that if a set E is disconnected, then there exist open sets A and B which satisfy these three properties. Okay, this means E is disconnected. But this is a contradiction because in the hypothesis E was connected, okay, which is a contradiction. Therefore, our assumption was wrong. So E satisfy the property 1. So call it 1. Okay. Any doubt? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। Okay. So let us see its converse part. Converse part means if E has this property, if E has this property, then E is connected. Okay. Conversely, suppose that E satisfies property 1 and E is not connected. Okay, assume on the contrary that E is not connected. So when E is not connected, then it is a disconnected set. Okay, so we will use this
this property of disconnectedness. So what is that property? It says that there exist two open subsets, okay, two open sets in R, okay, such that E is contained in A union B, A intersection E is non-empty, B intersection E is non-empty, and A intersection B intersection E is empty. Okay, ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है. Now, so E satisfies this one. So suppose let X belongs to A intersection E and Y belongs to B intersection. Okay. Assume that by trichotomy law, X is less than Y. Okay. So X and Y cannot be equal because this intersection is empty. Okay. X and Y cannot be same. So you assume X is less than Y. Now, अभी ये ट्रिक आपने पहले से देखा है, एक बार पहले आप ये ट्रिक देख चुके हैं. तो let us see this trick again. So what was the trick? So this was A intersection E, this was A intersection B intersection E. Okay, and A is here, sorry, X is here and Y is here. This part is A intersection E and this part is B intersection E, and they are disjoint. Okay, so they are disjoint. So what you now consider is this intersection A intersection E, this intersection with this closed interval X comma Y. Okay, you remember we have done this for showing that R is connected. We did this there. Okay, now observe that this is intersection of a set with a closed bounded interval. Okay, so S is bounded above. Actually S is bounded. Okay, S is a bounded set. Therefore, by the completeness property of R, can anyone recall what is the completeness property of R? Hello, हमने ये कुछ दिन पहले दो लास्ट मींस मंडे या ट्यूसडे में देखा है. कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है पंचशील? कौन बताएगा? अर्पित, अर्पित राज, अनुराग. हाँ अर्पित, क्या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहती है? For every bounded set, there exists an infimum and also. Okay. So for bounded above set, for non-empty bounded above set, there exists a supremum, and for non-empty bounded below set, there exists infimum. So we will use here bounded above property. Okay. So S has a supremum. S has a least upper bound or supremum. Okay. Say Z equal to supremum of S. Okay. Similarly, Y belongs to B and B is open. This means, okay, so Y was here, Y is in B, and this B is open. Okay, so there must exist an R such that Y minus R in B.
There must exist R positive such that y minus R belongs to B. Okay, this is from the openness property of B. And you know A and B are disjoint. A and B are disjoint. So this means this y minus R is not in A intersection E. Okay. So this means y minus R is an upper bound for upper bound of S. Okay. So from here what you get, so since this is least upper bound, Z was the least upper bound and y minus R is an upper bound, so that is less than equal to y minus R, and this is clearly less than y. So what you get is Z is less than y. Okay. Is there any doubt? किसी को कोई problem है इसमें? Similarly, this X belongs to A intersection E. Okay. So, and A is open in X. A is open in here. X means R. Okay. Here A is open in R. This implies A intersection E is open in E. What does this mean? This means if I add a small number R, positive number R, so X plus R would be there. Okay, X plus R would be in this set. In this set. Okay. So means X plus R belongs to A intersection E for some R positive. Okay. So now from here, okay, you may find R such that this and X plus R belongs to X comma Y. Okay. So this means X plus R belongs to S. Okay. And Z was the supremum of S. This means this number will definitely be less than equal to Z because Z was the upper bound for S. And this number is greater than X. This means X is less than Z. Okay. So what you get is at this place Z is less than Y. At this place you get X is less than Z. Okay. Combine these two, you will get X less than Z less than Y. Okay. And you know property of E was this. Whenever you have 2 points X and Y in E and X less than Z less than Y, this implies Z belongs to E. Okay. So from here what you get is Z belongs to E. Okay. Is this correct? Now, suppose Z belongs to A. Okay. So you know E is this A is open. A is open. Since A is open, so we can find an R positive such that Z plus R belongs to E, belongs to A. Okay. But Z is an upper bound for A. But Z is an upper bound. Upper bound for A. So this cannot happen, okay? Because upper bound will be always less than each, upper bound will be always greater than each element of the set. So this means from here what we get?
this thing, but this cannot happen for if so for R positive this is absurd. Okay, this is absurd thing, ये बेतुका है, because if you add something positive to a number it cannot be less than the number. Okay, so this is a contradiction. So this means Z cannot belongs to A. Similarly, you can okay. Next, you will prove that Z cannot belongs to B. So suppose Z belongs to B, and again B is open. Okay, B is open. This means there exists R positive such that Z minus R belongs to B. Okay, but you know A intersection B intersection E is empty. So this means Z minus R cannot belong to A intersection E. So this means Z minus R is an upper bound. Okay, Z minus R would be an upper bound of S. But this cannot be happen because every upper bound will be greater than equal to Z. Okay, but this is again absurd. So because here R is positive. Okay, this is again absurd. So this contradiction shows that Z cannot be in V. But see, now you know E was a subset of A union B. This Z was part of E. Okay, Z was part of E. But from here, Z was not a part of A and Z is not a part of B. This means this cannot happen. So Z E में तो है, लेकिन वो कह रहा है A union B में नहीं है. ये नहीं हो सकता because E is a subset of A union B. So if Z belongs to E, Z would be that must be in A or in B. So here we get a contradiction. Okay, this cannot happen. This cannot happen. Okay, hence E must be connected. Any doubt? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? Hello? Hello? No, sir. Wait a minute, हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. Sorry for this disturbance. Okay. Now, if you remember, we started this class, means this section connectedness via intermediate value theorem. आपको याद है हमने intermediate value theorem से शुरुआत करी थी. Okay, so let us prove intermediate value theorem. So first state what is the intermediate value theorem. कोई बता सकता है कि intermediate value theorem क्या थी? उस दिन किसी ने बताया था, मंडे को जब हमने शुरू किया था तो कुछ लोगों ने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट सही दिया था. कोई रिकॉल कर सकता है? हेलो, ओके, कोई नहीं. कोई तो बताइए प्लीज. अनुराग.
यस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मालूम है? सर, अगर सर थोड़ा थोड़ा ध्यान में। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताइए सर अगर एफ कोई मैपिंग है एफ टू आर, कहाँ से कहाँ एफ पर? एफ कोई मतलब एफ कोई एक्स वाई पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट मीन्स की आप क्या ले रहे हैं? क्लोज इंटरवल आप सर ले रहे मैपिंग हैं। सर, यस सर, क्लोज इंटरवल मान लो a कॉमा b से r में जा रहे हैं ना? यस सर, फिर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, एफ इज कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस। एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ओके, और साथ में ठीक सर, सर देयर एग्जिस्ट आर between हाँ, FA and FB. FA R is greater than FA and less than FB. ऐसा Then there exists X naught between A and B such that Fx naught बराबर R is equal to R. ओके, ठीक है, ये आपने बताया। यहाँ पर हमने क्या लिया? एक क्लोज्ड इंटरवल लिया है। ओके, अभी आपने देखा कि क्लोज्ड इंटरवल और इनफैक्ट कोई भी इंटरवल वो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर है। ओके, सो लेट अस गिव अ जनरल इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहाँ पर हम इंटरवल नहीं लेते, हम एक कनेक्टेड सेट लेते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। तो लेट बी continuous real valued function of a connected space X. Okay, suppose that X and Y are points of X such that वही जो बात आपने बोली थी, fx less than equal to c less than equal to fy, then there is a point z in x such that fz equal to c. Okay, this is intermediate value. Let us give a proof of. So what we have is X is connected set. Okay, X is connected. It is given, and F from X to R is continuous. Okay, you know, connectedness is a topological property. We have seen this. Okay, we have seen that continuous image of a connected set is connected. So this means this range of F is connected. Okay, किसी को इसमें कोई डाउट है? So this is connected subset of R. So since fx is connected, this means this would be an interval. Okay, this means fx is either singleton set or an interval. Okay, ठीक है? So if it is a singleton, then in that case fx equal to fy, and in that case, so if fx is singleton, then fx equal to c equal to fy. Okay, so then there are then for any element of x, in particular say x or y, for all
x in x, but we have fx equal to c. So this z could be any element of the space x, okay? But if it is not singleton, in that case it is an interval. If fx is not a singleton, and is a non-degenerate interval. Non-degenerate means it is neither open nor a singleton, okay? So it is an interval. In that case, you know, so every number between fx less than c less than fy, okay? So if fx is an interval, then you know this part belongs to fx, this part belongs to fy, and since fx is f capital X, f capital X is an interval, this c must belong to, in fact, this implies c must belong to fx, because fx is an interval. So c is in the range of f, so this implies there exists some z x such that fz equal to c. Okay, any doubt? किसी को कोई दिक्कत है? तो ये बहुत इजी सा था. Now we give a corollary of this is called fixed point theorem. So what does it say? It says every continuous function f from closed interval, okay, from closed interval AB to AB has at least one fixed point x. This means there exists, that is fx equal to x, okay, for some x belongs to it. So let us see this via a figure. So instead of AB, take this in this interval, okay, take this interval 0, 1 and 0, 1, okay. Then so range and domain is this. So then you make any continuous function, okay, any continuous function. Say suppose this is a continuous function. This function must have a fixed point, okay. This function must have a fixed point. So this means how would you get that fixed point? What you do, you draw the graph of fx equal to x, means this, okay, y equal to x line, okay. So it will intersect somewhere. So here it is intersecting at this point. This means this is our x, and this is also same x. So this is 0, comma x. This is x, comma 0. Okay. So I think this is very good to imagine theorems via figures, okay, via graphs. Okay, let me give a proof of this. Proof is again very easy. Suppose fa equal to a.
Okay, then we are done. Then A is a fixed point. Then A is a fixed point. Okay. So in this case, we have these are fixed points. Okay, this one is one fixed point, this one is another fixed point, here is another. So in this figure we have three fixed points. In this, if you make another, say another graph, say suppose this, then this point is this point will be the fixed point. Okay, if you take constant function, say constant function this, then at this point will be the fixed point. Okay, if fb equal to b, then b is the fixed point. B is the fixed point. Okay. So in this case, we assume this thing. So we will, what we assume is, now we assume that fa is bigger than a, like this, like in this figure. Here, this is fa and this is bigger than a, and fb is less than b, like this figure. Okay, and fb less than b. Now we consider a function g from AB to AB, from AB to R. So define a function g from AB to AB, AB to R, such that gx equal to fx minus x, and this is true for all x in AB. Okay, this means f minus identity function, f minus the identity function. You know, if you have two continuous functions, then from the algebra of continuous function, their difference will be continuous. So g is continuous. Clearly, g is continuous. Use the algebra of continuous functions. Okay, sum of two continuous function is continuous. Difference of two continuous function is continuous. Product of two continuous function is continuous. From there you what about GA is, hello, am I audible? Hello, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? GA equal to FA minus A. So you see FA is greater than A, so this is positive. What about GB? This is FB minus B, and you know B is greater than FB. This is negative. Okay. So GA is less than 0. GB is less than 0, and GA is greater than 0. So because G was continuous, now you invoke intermediate value theorem. Okay, invoke intermediate value theorem. So there exists sub z in comma b such that gz equal to 0. Okay, is this correct? And you know gz is fz minus z, and this is 0. This implies fz equal to z, and you can easily observe this z cannot be a and z cannot be b. So this implies z belongs to a comma. Okay.
So this Z is a fixed point for F. Do you understand this? Is this correct? Hello? Yes, sir. Okay. Abhi, so now let us see some exercises. So the first exercise for you. So let X be an infinite set, okay? X be an infinite set. And X have cofinite topology. Cofinite topology. Okay? So that X tau cofinite is connected. So how will we do this? Hello? So what you do, you assume that X is not connected, okay? Assume X is not connected. So बस इसी से चीजें हैं, assume X is not connected. This means disconnected. So what do you know about disconnected spaces? Disconnected space has proper Klopen subsets, okay? So for connected, you have only two Klopen subsets, empty set or space itself. ये आप जानते हैं? हेलो? हाँ, तो इसका मतलब डिस्कनेक्टेड है तो X के पास एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर क्लोपन सबसेट होगा, ओके? X है जो नॉन एम्प्टी proper Klopen set. Klopen set, you all know what is a Klopen set, okay? Call it A. Klopen means it is closed as well as it is open. अब देखते हैं कि A open है, okay? Since A is open, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? कैसा सेट होगा? हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, ये A ओपन है तो इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी है इसकी? हेलो, व्हाट इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी? x minus a is x minus finite a finite होना चाहिए सर. हाँ, तो इसका मतलब x minus a फाइनाइट होना चाहिए ना? यस सर. x minus a is finite, but A is closed as well. A closed भी है, A is closed as well. तो इसका मतलब क्या हुआ? x X minus closed है तो इसका मतलब x minus a is open, okay? Correct or not? yes sir. So this implies x minus a is finite. Is this correct? हेलो. हाँ, ये ठीक है. व्हाट सर? हाँ, लेकिन ये क्या सेट होता है? ये कौन सा सेट है बताइए? This is nothing but A. A है, ओके? अब आपके पास क्या आया? X को आप लिख सकते हैं A यूनियन x माइनस A, ओके? ठीक है? x माइनस A क्या था? फाइनाइट था. दिस इज फाइनाइट. यहां से आपको क्या मिला? A भी क्या है? फाइनाइट.
union of two finite set is finite. This implies X is finite. So इसका मतलब क्या है? अगर X इनफाइनाइट, यहाँ तो X इनफाइनाइट सेट दिया है, but we are getting X is finite, which is a contradiction. Therefore, a contradiction implies X is connected. Okay? कल मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी, किसी ने सोचा उसके बारे में? मैंने बोला था कि this closed interval is not homeomorphic to open interval. किसी ने सोचा? ओके, ये अभी फिर से ओपन है, इसका आंसर अभी नहीं देता हूं आपको, आप फिर से सोचिए, बहुत इजी है। हम लोगों ने जैसे R और R2 का हमने देखा था ना, R एंड R2 आर नॉट होम्योमॉर्फिक, सेम ट्रिक आप यहाँ पर भी यूज करोगे, सेम ट्रिक यहाँ भी यूज करो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल प्रॉपर, साथ में मुझे प्रॉपर भी बोलना चाहिए, क्योंकि R जो है वो क्लोज्ड भी होता है, वो ओपन भी होता है, वो तो आपस में होम्योमॉर्फिक है ही। प्रॉपर क्लोज सबसेट्स प्रॉपर ओपन सबसेट्स के होम्योमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है? ओके, so now we have seen that R with usual topology is connected. Okay, we have seen this. Can you give me any topology on R where R is not connected? दे सकते हो What, कोई sir? टोपोलॉजी? Give me a topology on R. Give me a topology on R. Okay. Give a topology on R. Say topology tau on R. Okay. Such that R tau is not connected. क्या कोई ऐसी टोपोलॉजी दे सकते हैं? अगर आपने कनेक्टेडनेस सही से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए। सर अगर हम सिंगलटन सेट लें उसमें टाउ में, तो सर वो कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे सर अगर हम कौन सा टाउ टाउ में क्या ले लें? सिंगलटन सेट ले लें अगर। सारे सिंगलटन ले लें, उसको क्या कहते हैं? कौन सी टोपोलॉजी होती है वो? डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लें सर। हाँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ओके। तो आपने एक 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 एग्जांपल देखा था जब शुरुआत में ही कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर वो सिंगलटन नहीं है, सेट सिंगलटन नहीं है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा डिस्कनेक्टेड होगी। ये तो आपने पढ़ा था, तो इसका आंसर देना चाहिए था। ओके, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने दिया भी। हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ी है। ओके, लोअर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ी है ना? लोअर लिमिट टोपोलॉजी का मतलब R विद टाउ L, इसको समटाइम वी कॉल RL और समटाइम वी कॉल इट फ्रोजन फ्री लाइन। क्या ये कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है?
ये टोपोलॉजी कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है? ओके, देखते हैं क्या इसके पास कोई प्रॉपर नॉन एम्प्टी क्लोपन सबसेट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। अगर कोई आपने ढूंढ लिया तो ये क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड क्लोपन सबसेट्स। ओके, तो आप जानते हैं कि आरएल पूरा का पूरा तो भैया क्लोपन होगा ही, ये तो हम जानते हैं। हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में जो होल सेट है वो तो क्लोपन होता ही है, और एम्प्टी सेट भी क्लोपन होता है। तो इसीलिए हम नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट लेके चले। तो कोई मुझे बताएगा कि इसकी बेसिस क्या होती है? याद करिए कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बेसिस क्या थी? हेलो सर ए कामा बी, जहाँ पे ए क्लोज था और बी ओपन था इंटरवल के सामने। कैसा ए कॉमा बी था? सर ए क्या था? क्लोज था, बी ए पे ओपन था। ओके, ओपन। यस सर। अच्छा, ए लेस थोड़ी देन देर बी के लिए हम सर। इन पर्टिकुलर 0,1 ले लेते हैं। ओके, ए 0 इज लेस देन 1। ये ओपन तो है बिकॉज दिस इज ओपन, बिकॉज दिस इज बेसिक ओपन सेट। ओके, बेस ऑफ, एंड दिस इज नॉन एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी भी है भैया। क्या ये क्लोज्ड है? इज 0,1 क्लोज्ड in RL? Sorry, is 0,1 closed or in RL? है, बताइए। हेलो, तो क्लोज देखने के लिए क्या करते हैं हम, बताइए। क्लोज कैसे पता करते हैं? हेलो, कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? R माइनस 0,1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए। माइनस क्या होगा? इंफिनिटी से 0 और 0 यूनियन 1 पे क्लोज और इंफिनिटी 0 पे सर क्लोज। 0 पर क्लोज नहीं, ओपन होगा। है, ओके। ठीक है। तो ये सेट तो भैया ओपन होता है। क्यों ओपन होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो भी यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं वो स्ट्रोक्स लाइन पर ओपन होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, ये हमने पहले देखा है। और ये क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है। ये तो बेसिक ओपन सेट है, दिस इज ओपन। सो दिस मीन्स यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। सो ये आपको अगर ये दिखाना है ये क्यों ओपन है और वो दूसरा वाला भी क्यों ओपन है, इसके लिए आप फिर से पढ़िए कौन से वाला पार्ट को, जो कि इसको आप पढ़ सकते हैं फिर से। ओके, जहां पर हमने वीकर और स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी की बात करी थी उसको देखिए। ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा। सो यूनियन ऑफ टू ओपन इज ओपन। So this means R minus 0,1 is open. इसका मतलब क्या हुआ? 0,1 क्या है? It's closed. Okay? 0,1 is closed.
तो 0 1 आपके पास ओपन भी आया है, नॉन एम्प्टी भी है वो, और ये क्लोज्ड भी आया है, ये प्रॉपर सेट भी है। तो हियर यू गेट ए प्रॉपर नॉन एम्प्टी closed subset of RL, therefore RL is disconnected. RL is disconnected. Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, हेलो, यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम है? ठीक था, ये समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आप लोगों के लिए फिर से एक एक्सरसाइज है। हम देखते हैं ये एक सेट S1, ओके, S1 अब आप सब जानते हैं क्या होता है। S1 is the unit circle in R2, okay, all those xy in R2 such that x square plus y square equal to 1. This is S1, okay, so that S1 is not homeomorphic to a subspace of okay. So please think about this. अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि कैसे होम्योमॉर्फिक होने के लिए आपको मैप देना होता है। होम्योमॉर्फिक नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, भैया ये डिस्कनेक्टेड तो नहीं है और दूसरा कनेक्टेड है या नहीं है। कोई पॉइंट रिमूव कर दें तो एक सेट डिस्कनेक्टेड हो जाता है, दूसरा नहीं होता है ना। ये सब हमने देखा है, तो आप यही सब इनमें यूज करिए। ये वाला एग्जांपल है साथ में जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं है, वहां भी यही ट्रिक आप यूज करिए। अगर ये दोनों होम्योमॉर्फिक होते तो कोई एक पॉइंट यहाँ से रिमूव करने पर क्या होगा। मान लो एक को रिमूव करता हूँ राइट साइड में क्लोज वाले में, तो क्या होगा, एक एक करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा पॉइंट उधर लेफ्ट में होगा, सॉरी राइट में होगा, तो उसको रिमूव करने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपने देखना है। ठीक है, ओके, मैं आज ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आया हुआ, तो मैं यहीं पर आपको एंड करता हूँ मीटिंग। किसी का कोई डाउट हो तो हेलो हेलो, यस सर। स्क्रीन आप लोगों को शो नहीं हो रही थी क्या? सर हो रही थी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और आप लोग अटेंडेंस भेज दीजिए अपने, ठीक है। और कुछ केवल 12 लोग आते हैं, आप थोड़ा सा लोगों को बोलिए अटेंड करें। अभी मैं नोट्स देना भी बंद कर दिया हूँ आपको, तो फिर तो कैसे करेंगे बताइए। आप लोग फिर सबको नोट्स देते हैं? सर अभी आप लेक्चर अपलोड करेंगे ना, तो वहां से लोग देके करेंगे। अच्छा, अगर मैं लेक्चर अपलोड ना करूं तो? तब में भी शायद आए कुछ दिन में। तो उनको बोलिए कि अभी लेक्चर अपलोड नहीं होगा, आप लोग क्लास अटेंड करिए, ठीक है। और हम लोग कल टेस्ट है हम लोगों का, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों को मैंने कब तक कितना पार्ट दिया हुआ, कुछ कनेक्टेडनेस का था 14 सितंबर तक का। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। यूनिट 1 को ज्यादा वेटेज दीजिए और होम्योमॉर्फिज्म और कनेक्टेडनेस का पार्ट देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो आज जो एक्सरसाइजेज दी हैं, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, ये होम्योमॉर्फिक नहीं है। ये 14 तक हम कर कल का टाइम क्या रहेगा? कल 9 से 10 या कुछ दूसरा टाइम चाहिए आपको? 9 से 10 ठीक है। यस सर। नहीं सर, सर यही ठीक है।
हाँ ठीक है, ओके। सर हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा प्लीज सर। लेक्चर अपलोड अभी नहीं होगा, लेक्चर अब बाद में देखेंगे, फाइनल के वक्त देखते हैं। लोग क्लास अटेंड नहीं करते तो लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं होगा कि वो लोग क्लास अटेंड करें। सर ओके, कुछ बच्चों के लिए हम लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा तो बच्चों को बोलिए कि भाई आइए क्लास में, आपके तो मित्र हैं। सर हम सर चलिए मैं सर नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम करूँगा। की वजह से छूट जाता है सर, इसको लेक्चर अपलोड कर बोल दीजिए सकते सर। हैं। ठीक है, वो मैं देखता हूँ, कभी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जाऊंगा ऑफिस तो मैं करूंगा, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जाऊंगा तो बाकी अपलोड करूंगा। और अभी बाकी अपने मित्रों को बोलिए कि भाई क्लास अटेंड करिए, ऐसे नहीं चलेगा। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।